Okay, so all of you are able to hear me. My voice is clear. So, okay. So today basically what we'll do आज हम कौन करिवा ना जो पार्ट टाइम स्टार्ट करिवा इंग्लिश रो ओके मु गोटे थरा कॉमन फ्रेमवर्क आपन को दे देबे कि डिफरेंट जो हमरो ओपीएससी रो एग्जाम्स अछि सेथरे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश किबा रिटन इंग्लिश रो जो पेपर रोची तारो स्ट्रक्चर कोन रोकी मेजर हमें पांचटा एग्जाम्स कवर करछु एतरे सिविल सर्विस जुडिशियल सर्विस फॉरेस्ट सर्विस सम अदर एग्जाम्स लाइक जंती असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ रे भी थिला इंग्लिश ओके रिटन इंग्लिश स्कूल ब्रांच रे भी आपनकर अछि ओईएस रो सो एई पांचटा एग्जाम जोडा मु कहली तारो लेटेस्ट क्वेश्चन जोडा लास्ट क्वेश्चन ईयर रो क्वेश्चन थिला आज हमें प्रेसी रो स्टार्ट करियो तो से केमिति फॉर्मेट रे टिके टिके डिफरेंस रहउती से जिंसटा हमें एथरे बुझिबा तो फर्स्ट आई विल कम टू द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चंस ओके तापर हमें प्रेसी की जिबा प्रेसी रो बेसिक रूल्स करिका देखिबा एंड फाइनली आई विल गिव यू अ क्वेश्चन ओके गोटे कि जे टास्क दिया जिवो बिफोर टुमारोज क्लास सेटा आपण करथिबे आ तार मॉडल आंसर हमें काली डिस्कस करियो ओके काली ऑनलाइन टाइमिंग आ भुवनेश्वर रे क्लासरूम टाइमिंग रहउची 8 am सो बेसिकली 5-6टा हमरो जिंस पडुची ओके कॉमन जो क्वेश्चन सुडा से कथा पूछ तो गोटे आपनकर आसुची फर्स्ट आसिला एसे ओके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश रे आपनकर गोटे फर्स्ट जोडा ओपीएससी सबु जाक एग्जाम्स आपण कॉमन पाइबे सेटा ले गोटे एसे नाउ एसे टा डिफरेंट एग्जाम रे केते लेंथ रो लिखिबार अछि सेटा अलगा ओके फॉर एग्जांपल सिविल सर्विस करी करे फॉरेस्ट सर्विस रे सेठी आपण 1000 रु 1200 वर्ड सेमती माने जो लॉन्ग एसेज आपण को लिखिया पे पड़िबो ऑन द अदर हैंड अदर एग्जाम्स रे जेंति की ओएस रे ओजेएस रे जुडिशियल सर्विस रे आपण को पर्टिकुलरली गोटे पैराग्राफ टाइप रो लिखिया पड़े सेटा 150 वर्ड्स भीतर ताको लिखिया पड़े आउ को एग्जाम रे भी सेमती से स्पेसिफाई कर देता है कि मतलब 200 वर्ड्स लिखो तो 150 वर्ड्स लिखो राइट सो एटा गोटे फर्स्ट क्वेश्चन आपण को आसीला इट्स कॉमन फॉर ऑल द एग्जाम्स सेकंड आसीला प्रेसी so presida again common for all the exams okay eta civil service re judicial service re forest service re okay and ha seta different year hoibo right eta bhi apar jo compulsory essay see civil service में एटा जो हमें पढ़ू छु ना ए बैच टा एटा हला compulsory english में तो सिविल सर्विस रे दीटा एसे अछि आपनकर गोटे तो कंपलसरी इंग्लिश रो एसेटा अछि गोटे ओके आउ गोटे आपनकर एसे पेपर अछि से दिस क्लास इज नॉट फॉर द एसे पेपर में अलगा बैच रहबो तार डायनामिक्स पूरा अलगा तार रिक्वायरमेंट्स पूरा अलगा एठी जहा एई बैच रे जहा मु पढौची एटा बेसिकली हला कंपलसरी इंग्लिश में ठीक है तो जोटा कि इन सम एग्जाम्स लाइक सिविल सर्विसेज एटा नॉन रैंकिंग पेपर ओके आ मार्क मिसेनी रैंक रे किंतु एटा क्वालिफाइंग पेपर इफ यू डोंट क्वालिफाई ताले बाकी खाता आपनकर करेक्शन होबनी whereas in other exams in forest service in judicial service ADL रे okay OES रे एगुडा रैंकिंग पेपर माने मार्क भी मिसिबो आपन राइट सो कॉमन जोटा कि सब एग्जाम्स में आपन को पढिया पडिवो एसे प्रेसी तापर आसीला कॉम्प्रिहेंशन ओके कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जोटा कि अनसीन पैसेज जोटा आपन कहउछंती सेटा रहइबो okay tapare in most of the exams not in every exam okay for example OES re maybe eta nathibo OS re achi OJS re achi OFS re bhi gote part achi okay that is translation and retranslation mane English to Odia to English ठीक है तो एटा हला गोटे टाइप रो कॉमन सिलेबस फॉर मोस्ट ऑफ द ग्रुप ए एग्जाम्स इवन सम ग्रुप बी एग्जाम्स भी जेमति कि आपनकर एडीएल हे गला कि ओईएस स्कूल ब्रांच हे गला ओके तापरे आउ केतेटा एग्जाम्स जेमति ओएफएस रे ओएस रे हमरो ग्रामर भी पडिबो ओके इंग्लिश ग्रामर which is not there in some other exams like
OS रे OJS रे नाही सेटा ओके सो एनीवे जा भी हो आमे फर्स्ट जोडा की कॉमन पेपर्स अछि ता ऊपर फोकस करिवा जोटा की सब एग्जाम रे पडुची सो आई विल स्टार्ट विथ प्रेसी टुडे बेसिक्स ऑफ प्रेसी कहबी ओके आउ तापरे आमे गोटे छोटो प्रेसी टे लिखिबा ओके प्रेसी विल टेक अराउंड 4 or 5 classes why because there are different levels of complexity अछि आज आमे जोटा स्टार्ट करिया बहुत सिंपल प्रेसिस रो स्टार्ट करिवा ओके आउ आस्ते आस्ते आमे पूरा हाईएस्ट लेवल प्रेसी पर्यंत छिबा ठीक अछि let us first have a analysis of the different exam questions जेतला हम प्रेसी देखिबा ओपीएससी कोन कोन पकोची ओके सेतरे इंस्ट्रक्शंस कोन रहउची काहे ना प्रेसी भी डिफरेंट टाइप रो अछि ओके प्रेसी रे कोन आपनकर स्किल सेट ता को ऊपर आपन को फोकस करिवार अछि दैट इज ऑन द कंप्रेशन रेशियो ठीक अछि सपोज 1000 वर्ड रो आपन को ओरिजिनल पैसेज ता दिया है नॉर्मली आपनकर सेटा केते वर्ड रे आपन प्रेसीटा रखिबे अराउंड 330 वर्ड्स पाखा बाकी ठीक अछि प्लस माइनस 10% तार एरर एटा थाए दैट मींस आपण 1000 वर्ड आपण 330 वर्ड्स रे प्लस माइनस 10% अधिका कि कम वर्ड्स लिखिले इट इज एक्सेप्टेबल 10-15 वर्ड एपट सेपट हेले चलिबो ओके सेटा गोटे जिंस आउ को केतेटा एग्जाम रे से जेते बड़ पैसेज भी देथौ से वर्ड्स दे दोछि एति की वर्ड रो प्रेसी लेखन ओजेएस 100 वर्ड्स में दोछि को एग्जाम रे 150-200 वर्ड्स रो प्रेसी लेखन बोली कहउछि ओके ता माने कोन जदि मते 1000 वर्ड रो गोटे पैसेज देछि आ मते कहउछि सेटा 250 वर्ड्स रे लेखन ता माने सेठी मोर मते कंप्रेशन रेशियो बहुत बढ़ी गला ता ओके मते 25% मते ताको कंप्रेस करया पे पड़े ओके 25% को रिड्यूस करया पे पड़े ठीक अछि तेनु से स्किल ता फुनी मींस केते इंपोर्टेंट पॉइंट्स अछि ता भितरु बेसी इंपोर्टेंट कोटा कम इंपोर्टेंट कोटा सेटा ही जानिले मु काढी की ताको इधर 1/3 हो 1/4 हो जा भी मु तो कर पारी ओके सो सेति भाई just let us go to the analysis of the latest questions of OPSC related to this okay I'll just presentation taku I'll just switch to the PDF ये जो बड़ा यूज करछुटा ग्रुप रे मु दे देछि क्लास अगरु you can just you know get it from the group also जो माने जस्ट एपे ग्रुप जॉइन करिसंती व्हाट्सएप ग्रुप टा तो मे बी अपन सेटा पाइबेनी जेतो अपन माने क्लास परे टिके जॉइन करछोनी मु सेपे टेलीग्राम चैनल रे दे दोची सेठू अपन जेबे भी प्रीवियस योडा भी अपन एक्सेस करि पारे ओके दे देले बे टेलीग्राम चैनल रे तो सेडा में तको रेफर करियो हां ओके सो लेट अस स्टार्ट एटा देखंतु फर्स्ट एटा हला ओईएस रो ओके एटा ओडिशा एजुकेशन सर्विस रो तार स्ट्रक्चर टा देखंतु we are only concentrating on presi okay just see what is the structure of the question रे कोन आपन को पचाछ केतेटा एग्जाम्स रे से बहुत ही स्पेसिफिक जिंस दिए ओके फॉर एग्जांपल एठी write a presi of the following and suggest a suitable title for it
तेणु एठी से क्लियरली आपण को कहूची कि टाइटल टा सप्लाई करंत राइट ए प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग एंड सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर इट बुझ पाले सो एटा हला ओईएस स्कूल ब्रांच रो क्वेश्चन त माने सी जोठी कुहा हेनी खाली गोटे ही एग्जाम अछि आई थिंक एडीएल रे से क्लियरली देथिला कि डू नॉट सप्लाई ओके ए सुटेबल टाइटल टाइटल दियंतु तेणु सब बेले इंस्ट्रक्शन टा प्रॉपर्ली पढ़िबे ओके कि टाइटल दबार अछि कि दबार नहीं जदि चुप अछि माने टाइटल निश्चित दबार अछि बाय डिफॉल्ट यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव द टाइटल ओके by default you are expected to give the title got it ठीक है file later okay understood so here basically clearly instruction has been given write a précis of the following and suggest a suitable title for it suitable title for the précis तो आपण को एठी टाइटल टा दबार अछि आउ भी गोटे जिंस देखंदो एठी लेंथ विषय रे किछ कहलानी कि राइट इट इन 100 वर्ड्स 150 वर्ड्स ता माने जोटा हमरो नॉर्मल रूल जोटा रूल सुडा को जीबी परे ओके एबे कहबी दैट इज 1/3 तेनु आपण को 1/3 बाहर करिवार अछि ओके एबे कथाडा हला कि एठी नंबर ऑफ वर्ड्स भी देनी दैट मींस यू हैव टू काउंट द वर्ड्स ओके जनरली डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर रे बहुत टाइम थाए तेनु वर्ड्स आपण गणी भी परिबे ओके जागर सेति की पेशेंस अछि पूरा एग्जैक्टली मोर केते वर्ड्स अछि जदि मु गणी भी ताले ता मेथड हला आपण लेट अस से एठी ए केस रे मु स्टार्ट करली एठी ओके सो फर्स्ट लाइन रे मोर रहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो पेंसिल रे साइड रे 10 लिख देली तापर जा जा ऐड करबी लास्ट रे सेमती परिबो ओके किछि टाइम रो इशू होबनी एमते हेले कोन ना एग्जैक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स बाहरी ठीक अछि अप्रोक्सीमेशन दरकार नहीं तो के जण थांती नहीं इति के गणिबो तक ऑल्दो टाइम आपन को बहुत मिलियो सेटा मो क्लियरली कहि दउ छी एमती नो कि टाइम मिलिबो ओके टाइम मिलिबो सफिशिएंट मिलिबो ओके जदि सेमती आपण भाबिले ताले एवरेज आउट कर देबे ओके प्रथम रु दी लाइन नेबे ठीक अछि तो एति की केति की वर्ड्स हला डिवाइडेड बाय 2 एति की एवरेज ओके तापरे सेमती मजरू दी लाइन नेबे लास्ट रु दी लाइन नेबे तो एवरेज आपण को आसी गला गोटे लाइन रे एति की वर्ड रोच ओके एबे केति कीटा लाइन अछि इनटू कर देबे बट सेमती जदि लेखु चंदी यू हैव टू यूज द वर्ड अप्रॉक्स और अप्रोक्सीमेटली ठीक अछि माने एग्जैक्ट तो आपण वर्ड काउंट करि नांती तो 15 20 वर्ड एपर सपोर्ट होबो ओके सो अप्रोक्सीमेटली जदि सेमती आपण अप्रोक्सीमेशन करू चंती इन दैट मेथड taking the average of 2 lines in the beginning 2 lines in the middle 2 lines at last हैला तो एवरेज आउट आपनकर हे जिवो तो सेटा ओटे जहा भी मु एक्स वाई जेड ओके एक्स वर्ड्स अप्रॉक्स मु फर्स्ट मेथड टा प्रिफर करिवि ओके काई ना बहुत समय आपनकर रहइबो ओके परीक्षा रे एमति नो कि टाइम सरी जिवो तेणु गणी पारिबे वर्ड टा स्पेशली किछिटा क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल एसे रे मते वर्ड गणीवर नहीं ओके कॉम्प्रिहेंशन रे मते वर्ड गणीवर नहीं ट्रांसलेशन रे मते वर्ड गणीवर नहीं तो वर्ड टा एक्चुअली गणी की लिखिबार अछि एठी जो क्वेश्चन रे मते कुआइतिबो जेमति कि केतेटा जगह रे कुआइते आपण एसे लिखंतु 1000 वर्ड भितरे ठीक अछि किंबा आपण एसे लिखंतु 150 वर्ड भितरे ओके तो सेठी मते लिखिया पड़िबो कि म केते वर्ड्स लिखिली सो इधर यू काउंट ओके पूरा 1 2 3 4 करी सेमती काउंट करि परिबे अदरवाइज अप्रोक्सीमेट करिबे जहा भी आपन सुविधा होछ एटा गला ओईएस रो सो एटी किछि नै जस्ट इट हैज गिवन यू क्लियरली कि आपन ओटे प्रेसी लेखंतु आउ टाइटल टा भी दियंतु ओके तापर आसिला एटा फॉरेस्ट सर्विस रो नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा देखुछंदी सो फॉरेस्ट सर्विस रे सो यू सी व्हाट इज द Question number 2, just nothing. Write précis of the following passage. बस 40 मार्क पे देला से थोड़े पैसेज टे दे देची वर्ड किछि लेखाइनी सेतरे तो वर्ड भी आपन काउंट करिया पड़िबो
आउ जेतु किछि भी से लिखिनी ता माने कोन प्रेसी रे मते टाइटल दबार अछि एतरे ओके आउ लेंथ मोर 1/3 रही राइट तो फॉर दैट आई हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्ड्स बुझि परले दिस इज ओडिशा फॉरेस्ट सर्विस 2019 रो पेपर ओके मु खाली देखुची कोन को टाइप रो आपनकर डायरेक्टिव्स पडिची प्रेसी को नै राइट द प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज बस आउ किछि कहलन जोठी किछि कहनी जेमति कि सिविल सर्विस रे कोएनी आउ एठी भी कोएनी तो सेठी अपन टाइट जोठी कहूनी टाइटल न दियंतु सेठी अपन निश्चित भाबरे देबे ओके एटा ई वर्षर ओजेएस क्वेश्चन एठी कोन कहला मेक ए प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन 100 वर्ड्स ओके तो लेंथ आपन को दे देला तो आर एबे ओरिजिनल पैसेज केते लंबा मोर किछि सेतरे इंटरेस्ट नै जानिबा तो आ एठी मते गणिवार ना बुझि परले तो जो माने ओजेएस में प्रिपेयर करचंदी से ओरिजिनल पैसेज जो लेंथ मते गणिवार ही नै काहे कि आई हैव नथिंग टू डू विथ इट से मते कहूची मोर जो प्रेसिडा लिखि के दबार अछि सेटा 100 वर्ड्स दबार अछि सो आई विल स्टिक टू दैट ओके एटा हला जुडिशियल सर्विस तापरे सिविल सर्विस रो सो हियर आल्सो इफ यू सी question number 4 write a précis of the following text in about 350 words again the same thing जोटी मते वर्ड दे देछि एति की वर्ड रे प्रेसी लिखंतु ओरिजिनल पैसेज रो केते लेंथ अछि आई एम नॉट कंसर्न ओके कैन से 1/3 हबो कि 1/4 हबो मते जा बेले 350 वर्ड रे लिखबार अछि ओके सो आई विल start forming my draft précis okay accordingly कि मते 350 वर्ड रे प्रेसी ता लिखबार अछि राइट so write a précis of the following text in about 350 words तो माने एथरे कोन 350 वर्ड रो प्रेसी लिखा हबो टाइटल सप्लाई करा ओके आउ लास्ट रे हला एडीएल रो असिस्टेंट डायरेक्टर लो आउरी भी बहुत गुडे एग्जाम्स अछि ए जो ओपीएससी रो जोडा की ग्रुप बी रो तो सेथरे भी प्रेसी पड़े ओके मु एई गुडा ही पांचटा एग्जाम्स बेसिकली नै छी एथरे अपन जो देखिबे एडीएल रे से क्लियरली इंस्ट्रक्शन रे देला write a précis of the following passage in about 1/3 of its length तो से लेंथ का भी कह देला नॉर्मली जोटा हमर 1/3 रहेगा तापर से कहला प्लीज डू नॉट ऐड ए टाइटल टू इट डू नॉट ऐड ए टाइटल तो एठी मतलब टाइटल दबार बुझि परले तेनु इंस्ट्रक्शन कोन रहूची आपनकर जे स्पेशली मल्टीपल एग्जाम्स दोचंती ओके तो प्रेसी रो क्वेश्चन रे हलरे देखिबे कोन आपनकर ओके पचरा होउची सही हिसाब रे आपन को ताको लिखिबार अछि ओके सो दीज आर द थिंग्स यू हैव कीप इन माइंड सर ओजेएस रो किछि लेखिनी कि टाइटल दबार अछि कि नै सो वी विल गिव इट you have फ्रॉम to आवर give ओन the title yes you have to give the title जोठी मेंशन हुए नी ओके टाइटल दियंतु कि न दियंतु सेठी बाय डिफॉल्ट यू हैव टू गिव ओके आउ जोठी मेंशन हेई छी कि अपन टाइटल देबेनी तो ऑब्वियसली देबेनी आउ जोठी लेंथ मेंशन नहीं दैट मींस लेंथ इज 1/3 बुझि परले ओके सर okay fine so now let us go to the basics of précis okay précis रो basics ऊपर टिके डिस्कशन करिबा ओके सो किछिटा बेसिक जिंसो जोरा एग्जाम पई दरकार ओके एटा अपन जदी इफ यू आर इंटरेस्टेड
you can read this आपण ताको ए डॉक्यूमेंट टा ऐप रे अछि सेतर आपण ताको पढि परिबे ओके बेसिकली हमर जो प्रेसी रो केतेटा इंपोर्टेंट पॉइंट्स अछि जोटा आपण को मन रखिया पे पड़िबो ओके एठी जेमति देछि स्कूल रे जेमति एसी माने प्रेसी लेखंती कि आपण फर्स्ट ड्राफ्ट करिवे सेकंड ड्राफ्ट करिवे ओके एते समय हम पाबे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे नाही तेणु एठी जोटा कि हमें वर्किंग प्रिंसिपल जदि हमें बाहर करिवा ताले प्रेसी रो 4-5टा रूल्स आपण को मन रखिवार अछि ओके 4 or 5 rules you have to keep in mind right फर्स्ट रूल टा हला जेतले आपण को प्रेसी लेखिबा स्टार्ट करूचंती ओके फर्स्ट हैव ए स्लो एंड डिटेल्ड रीडिंग जोटा कि फर्स्ट रीडिंग प्रॉपर्ली आपण बुझिले ओके आउ जनरली एई हैबिट टा चेष्टा करिवे इनकलकेट करिया पई कि से फर्स्ट रीडिंग रे मु अंडरलाइन कर देबी कोन कोन इंपोर्टेंट पार्ट्स अछि ठीक अछि सेटा जेमति मु अंडरलाइन कर देबी राइट सो दैट जेतेबेले क्वेश्चन मान मते तार प्रेसी बनेबार थियो फर्स्ट ड्राफ्ट किबा आउटलाइन टा मु बनेबी तो मु सेही पॉइंट्स उडा को जस्ट कॉपी पेस्ट करी ओके सो that thing you have to write. So it is some details dechi what is pressy and how you will write and all. Okay, এটা if you are interested you can read it. Okay, ताको पढ़ी परिबे अपन थरे. But important points जदि मु ताको analyze करिबी कि summarize करिबी. Point number 1. Okay, जोटा कि अपन कर रहइबो is pressy रो first जिंसो जोटा most important for a pressy is the understanding. You have to understand the pressy क्या ना pressy टा जेतले हमें लेखुछु ओके सेटा पैराफ्रेज करके लेखिया पे पड़िबो ओन वर्ड से लेखिया पे पड़िबो जेमति कॉम्प्रिहेंशन रो आंसर टा भी सेम जिंस रहउछ ताले मते बुझिया पड़ियो pressy टा प्रॉपर तो फर्स्ट स्लो रीडिंग करिवे जानिबे कि कोन कोन इंपोर्टेंट पार्ट अछि क्या ना pressy ऊपर तो किछ क्वेश्चन पड़िवार नै ना ओके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़िबारे आउ pressy रो ओरिजिनल पैसेज पढ़िबारे गोटे बड़ डिफरेंस अछि reading comprehension में कहबी reading comprehension descriptive reading comprehension जेतले हम देखुछु सेतबेले it is always better to first see the questions देखि देबे कोन से पचारला then you start with the passage okay ताले सेतले मोर ओटे आईडिया आसी जिवो कि हां अच्छा ए जिनसोडा पचारला तो मु मार्क करी करी चली प्रेसी रे सिमति किछ होबार नै तो आपण आराम रे पढिबे आउ जो जोटा इंपोर्टेंट लागुची सेटा सेही क्वेश्चन पेपर रे ही अंडरलाइन कर देबे ता भितरु परे जणा पडियो कि बहुत गुडे इंपोर्टेंट नुहो किंबा इंपोर्टेंट हेइथिले भी मु ताकू आउ रखि परिबिनी प्रेसी रे काइना मोर ओके लेंथ हे जाउछ राइट सो स्लो रीडिंग एंड अलोंग विथ द रीडिंग यू विल अंडरलाइन व्हाट यू फील इज इंपोर्टेंट ताले कोन ठीक अछि हमें केमति डिस्क्रिमिनेट करिवे एटा इंपोर्टेंट नुहो ऑल द फैक्चुअल थिंग्स that is non-important seta important okay factual things important conceptual things important ठीक अछि let's say aji जोटा हमर एक्सरसाइज रे दिया आइची तो से वुमन एम्पावरमेंट ऊपर पैसेज टा अछि वुमन एम्पावरमेंट ऊपर जो पैसेज टा अछि ओके सेतरे किछटा स्कीम्स भी देछि जेतेबेले मु ताकू कंप्रेशन रेशियो मोर बहुत हाई रहउची लाइक आई हैव टू कंप्रेस इट up to 25% तो सेगुडा मु ओमिट करबी मते बेसिकली लेखिबार कोन अछि ना जो गुडा की कॉन्सेप्चुअल जिंस इंपोर्टेंट पॉइंट्स जोडा की मिस करी हबन ओके तो सेटा को आइडेंटिफाई आपन को करिया पे पड़िबो दैट इज वेरी इंपोर्टेंट दैट पार्ट इज वेरी इंपोर्टेंट ठीक अछि सो अंडरलाइन सेगुडा करले सेति भाई अंडरलाइनिंग इन द फर्स्ट रीडिंग इज वेरी इंपोर्टेंट तो आपण पढी देले you have underlined what you feel is important okay now come to the first draft आपण अगर फर्स्ट ड्राफ्ट ता बनेबे किंबा स्कूल रे कोन होतला दीटा ड्राफ्ट बनाउते कि फर्स्ट ड्राफ्ट और सेकंड ड्राफ्ट एमती एटी हमर समय नै दीटा ड्राफ्ट करिया तेनु इधर मु ताको ड्राफ्ट प्रेसी कहि पर और ताको रफ प्रेसी कहि पर ओके किंबा आउटलाइन भी कहि पर जेमति कि एटी से आउटलाइन आपण को कहू देखिबा हम एग्जांपल्स को So you can just write draft pressy or rough pressy. What is rough pressy? अपन देखिए समस्त तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करंती अपन वर्ड रे गोटे डॉक्यूमेंट रो समरी बाहर करन देयर इज ए फीचर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव समरी यू समराइज
ओके आज जाई कि हमको लैपटॉप रे ताको गोटे ताको पैसेज दियंतु और ताको समराइज करंतु देखंतु से समरी रे कोनटा से दो so you will find that it just gives the important extract of a passage ता अर्थ गोटे पैसेज रे 50 टा लाइन अछि ताको लागिला ए 50 टा लाइन रु 15 टा लाइन ए 15 टा लाइन इंपोर्टेंट से 15 टा लाइन को सी जस्ट कॉपी पेस्ट करके देखि दो बस किछि चेंजेस किछि करा हो वर्ड्स चेंज करा हो नहीं किछि पैराफ्रेजिंग किछि हो कॉपी पेस्ट ए 15 टा इंपोर्टेंट बस पेस्ट हे गला सेति आपण को फर्स्ट ड्राफ्ट टा किबा आउटलाइन टा फर्स्ट ड्राफ्ट मोर बाहर हो फर्स्ट ड्राफ्ट सेकंड ड्राफ्ट दीटा जगह कराबे बट एठी हमर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे बहुत जण तो ड्राफ्ट भी करंती सीधा लिखिबे प्रेसी ओके सो एटा बहुत पिला मते पचरंती कि डायरेक्टली प्रेसी लिखिबा कथा ना ओटे रफ की ड्राफ्ट प्रेसी करिया कथा देखंतु द डिफरेंस बिटवीन गेटिंग लेट्स से ओजेएस रे आपनकर 25 मार्क्स आसु जणे बहुत बढ़िया प्रेसी लिखि चंदी पूरा ठीक टाइटल देइ चंदी प्लस गोटे ड्राफ्ट प्रेसी भी लिखि चंदी ओके से पिलार चांस अछि कि ताकू यू नो दे कैन गिव समथिंग अराउंड 20 मु जदी भलरे खाली प्रेसीटा लिखि दे कि आसी मोर 2 मार्क खंडे कम रहि पर से 2 मार्क रो वैल्यू भी बहुत अछि ओके जो गुडा एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अछि रिटन फेज रे स्पेशली ओके प्राय सब गुडा बहुत ही कॉम्पिटिटिव ओजेएस रे कोन कि जेतु ताकर पर्टिकुलर फिक्स्ड कट ऑफ अछि तेनु इट बिकम्स वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव एट द मेंस लेवल माने मेंस रे प्राय 90% पिला बहुत बढ़िया आंसर लिखନ୍ତି प्रॉब्लम कोन हुए ताको भितरु प्राय समस्त पळेबे जे रखिला 45% ऊपर से इंटरव्यू को वाला इंटरव्यू रे प्रॉब्लम ता है जे केबे केबे एते स्क्यूड रेशियो थाय जेंति एथरा को बहुत अधिक पिला थे बहुत कम वैकेंसीज थे ओके सिविल सर्विस से प्रॉब्लम ता नहीं सिविल सर्विस रे 1:2 ठीक अछि तेनु सेति पई से जो 2 मार्क्स रो डिफरेंस भी किछटा एग्जाम्स रे बहुत अधिक है जे पारे तेनु इट इज माय रिकमेंडेशन दैट यू राइट ए आउटलाइन ओके ओटे ड्राफ्ट प्रेसी नियाति भाबरे करि एमिति बहुत अधिक टाइम आपनकर नै जीवनी ओके बहुत अधिक टाइम आपनकर नै जीव तारो मार्क हमें देखते भाई थरे ओएफएस रो 40 मार्क्स से दोची राइट सो 40 मार्क्स दले अपन से हिसाब रे टाइम कैलकुलेशन ता करी मु कहली भी सेटा टाइम मैनेजमेंट पुनी केमती कराबो ओके मु सेटा दे देबी आपनकर तारा ग्रुप रे दे देबी टाइम अपन निजे भी कैलकुलेट कर परिबे देखन टोटल केते मार्क्स रो एग्जाम केते मिनिट्स दिया होची ठीक अछि त सपोज आपनकर 250 मार्क्स रो एग्जाम अछि कि 150 मार्क्स रो एग्जाम 150 मिनिट्स दिया हिच ता माने 1 मार्क को 1 मिनिट ओके ओजेएस रे जेंति पडुछ 150 मार्क्स 150 ओके मिनिट्स तो गोटे मार्क को गोटे मिनिट आपनकर पडुछ प्रेसिडा 25 मार्क मते 25 मिनिट भीतर लिखियार अछि ओके ठीक सेमती सिविल सर्विस में आपण बाहर कर करिए 250 मार्क्स ओके 180 मिनिट्स आपनकर अछि तो से हिसाब रे कितने मार्क अछि तले से हिसाब रे मते कितने मिनिट दबार अछि फॉर एनी एग्जाम यू हैव टू कैलकुलेट दैट सेटा आगुरु कैलकुलेट करके जाइथिबे ता भितरु गोटे 2 मिनिट आगुरु टिके सार देले भी बेटर केना यू कैन नॉट राइट लाइक ए कंप्यूटर की गोटे सरला पुनी नेक्स्ट स्टार्ट कर दियो ओके अपन तो भाबे पड़िबो टिके रेस्ट भी नबे पड़िबो ओके तो सेट पई से जिंसटा माइंड रे रखिबो ओके सितो जी नहीं यदि ठंडा हो तो ये कर देंगे ना तो कम में दियन टेम्परेचर फॉरेन सर्विस में प्रेसिडेंट चाइल्ड से जे बिना डॉक्टर के प्रेसिडेंट है तो 100% कम 2-3 मार्क्स का डिफरेंस है तो बहुत मार्क तो डिफरेंस है जीवन सपोज समवन हैज रिटन अ परफेक्ट प्रेसी से ड्राफ्ट किछ लिखि नांती एंड समवन हैज रिटन अ परफेक्ट प्रेसी विथ अ परफेक्ट ड्राफ्ट कितने डिफरेंस हो मार्क 2 to 3 मार्क्स ठीक अछि आई हैव सीन लॉट ऑफ कॉपीज जो तरीके से उनके ड्राफ्ट लिखि नांती बट से बहुत भलो रैंक पाइ जदी इवन टॉप 10 भीतर भी रहि छन ओके बट ड्राफ्ट दबाटा बेटर ओके दैट इज रिकमेंडेड एक्चुअली जतरे माने क्लासिकल जोटा में स्कूल लेवल प्रेसिले को दीटा ड्राफ्ट करा ठीक अछि तो एनीवे एठी जतले हमें ड्राफ्ट कथा कहूछु तो आपण कोन में से एग्जीक्यूटिव समरी आपण को बनेबार अछि okay you find out which are the important words important sentences ताको just okay copy paste कर दिए सरला एठी से जो स्कूल मेथड ता देछ
Okay, if you see, so जो मेथड सेक्शन रे देला फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग आम पाखे फाइनल रीडिंग तीनटा रीडिंग आपन करार अछि वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट गोटे रीडिंग स्लो रीडिंग रहइबो इंपोर्टेंट जोड़ा जोड़ा मते लागुची इंपोर्टेंट ताकू मु अंडरलाइन कर देली ता माने कोन जोटा मु अंडरलाइन करी नि ताकू मते देखिबार ही ना ओके तो फॉर एग्जांपल लेट्स से एग्जांपल्स नेले जहां पड़ी आपन सेटा 2 3 एग्जांपल जोटा इति देछि ओके सो एठी तापर से कोन कहला ना आपन फर्स्ट कॉपी करिवे तापर सेकंड कॉपी और फाइनल कॉपी करिवे राइट जस्ट यू कैन गो डायरेक्टली टू द रफ और द फर्स्ट आउटलाइन ओके आउटलाइन हे गला तर आउटलाइन टा केमति लेखाबो यू सी हियर ओके एठी जेन देछि आउटलाइन से कोन देला ना इंपोर्टेंट ओके ओनली द इंपोर्टेंट सेंटेंसेस से ताको लेखिला सी एतिन डैश लगे कि लेखिछि आपण गोटे 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 किछि स्टार देकी कि किछि न देकी गोटे 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 लाइन में लेखि पर ओके so you write only those sentences which are important ठीक अछि केते जण एमती भी करंती कि पूरा सेंटेंस में लेखंती सेने कोन करिवे ना फ्रेज टा कोइ लेखिबे जोटा इंपोर्टेंट अछि ओके आई वुड रेकमेंड कि आपण पूरा सेंटेंस टा लेखिबे किछ असुविधा तो एटा आपण कर नेक्स्ट स्टेज गला कि मु आउटलाइन टा बनै देली एबे आसरा मोस्ट इंपोर्टेंट ओके दैट इज पैराफ्रेजिंग इट जहां मोर आउटलाइन रे अछि मो प्रेसिटा एग्जैक्टली सेही टाइप रो किंतु मो भाषा ठीक है आई हैव टू पैराफ्रेज इट आई हैव टू राइट इट इन माय जेमते हम कहू इन योर ओन वर्ड्स ओके सेथरे जो भाषाटा आपनकर देछि ओरिजिनल पैसेज रे ताठू अलगा होबा कथा ताको कॉपी पेस्ट करिवेनी जेतरे हम ड्राफ्ट रे करके ओके ऑन द अदर हैंड इट आल्सो हैज टू बी रिमेंबर्ड दैट ड्राफ्ट रे आपण पैराफ्रेजिंग करिवे ठीक है तालो किछ मान ही रहले यदि मु ड्राफ्ट रे पैराफ्रेजिंग करली ताल तो मु सीधा प्रेस लिखि पैराफ्रेजिंग माने गोटे बेसिकली गोटे ओरिजिनल सेंटेंस को सेम मीनिंग रखी की माने तार सिमेंटिक्स टा को सेम रखी की अपन द सिंटैक्स टा माने तार वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड ओके द फॉर्म टा चेंज कर दे बट द सिमेंटिक्स टा सेम तार मीनिंग टा सेम ओके तेणु सेथरे कोन देखि कि हमें ट्रांसलेशन रे आगु बढ़िबा ट्रांसलेशन रे हम कोन देखु सिंटैक्स और सिमेंटिक्स दीटा जको प्रिजर्व हो ओके बट प्रेसी रे आपनकर सिमेंटिक्स टा प्रिजर्व हो सिंटैक्स विल चेंज ठीक है तो सेटा गोटे जिंस मन रखियार अछि रफ टा कॉपी पेस्ट हो ओरिजिनल क्वेश्चन रो आपण जो फाइनल फेयर प्रेसीटा लिखिबे दैट विल बी based on that rough presi or the outline or the draft but in your own words ठीक है तो सेटा बहुत इंपोर्टेंट और प्रेसी केते आपण निज भाषा रे लिखि जति ता ऊपर मार्क्स आसे एटा गोटे जिंस सेकंड जिंस जोडा कि प्रेसीटा पूरा सिंपल इंग्लिश रे लिखा ठीक है तो आपण फॉर एग्जांपल ओरिजिनल पैसेज रे बहुत ही वोकैबुलरी हाई देज हाई वोकैबुलरी यूज करछ ता अर्थ या नहीं कि मु प्रेसी रे सेमिति ही यूज कर हाई वोकैबुलरी ठीक है जत्ते सिंपल रखिबी मते सेते अधिक मार्क मिलियो मोर भूल भी कम हो इंग्लिश पेपर रे ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी से माने बहुत जगन ठीक है तेनु सेटा टिके देखिबे आपनकर अलगा पेपर्स करिका फॉर एग्जांपल सिविल सर्विस रे आपण अलगा जा आपनकर पेपर्स होला जीएस रो के ऑप्शनल पेपर्स रे मे बी एते से माने स्ट्रिक्ट न ही परंती बट इन इंग्लिश पेपर दे वेरी स्ट्रिक्ट तो जत्ते सिंपल वर्ड्स मु चूज करबी मोर भूल होबार संभावना कमी जिवो रादर देन राइटिंग ए यू नो बहुत हाई वोकैबुलरी वर्ड टेके सेतर नाही मार्क अधिक आसे ओके नाही आपन लागुथिबो कि गोटे इंप्रेशन दबो भलो बट सेमते एक्चुअली न थाय जत्ते सिंपल थिबो आपन को इंप्रेशन सेते भलो हो सेते बेटर हो बुझि पालो सो you can just go through it okay see कौन करिछि एठी केमति से आउटलाइंस ता लिखिछि एटा फर्स्ट आउटलाइन देखिला these are actually direct lines from the passage okay ताको से कॉपी करछि आ एठी रखिछि ना ना एटा जो जोटा मु एबे शेयर करछि जो एटा मटेरियल रो जो पार्ट ता ठीक है सर ड्राफ्ट रे खाली हमर सिलेक्टेड लाइंस रहइबो राइट एंड Yes.
किछि पैराफ्रेज रहबन बट जो फाइनल पैराफ्रेज सेटा हम फाइनल ये रे लिखिबो माने जो हाँ फाइनल फाइनल प्रेसिटा आ गोटे भी इंपोर्टेंट जिंसो एठी आपण ओरिजिनल पैसेज रे देयर मे बी मल्टीपल पैराग्राफ्स बहुत गुडे पैराग्राफ रे से देथे पारे किंतु प्रेसी सब गोटे पैराग्राफ लिखा हुए प्रेसी रे आपण ताको डिफरेंट पैराग्राफ्स को नॉर्मली करिवेनी एक्चुअली इफ यू सी इट एक्चुअली डिफर्स इन द अमेरिकन ये रे इंग्लिश ये रे बट एठी हमरो ओपीएस रे आपण गोटे पैराग्राफ रे लिखिबे इफ यू हैव एंगना पिला को आपको 0 0 भी मिल जाई छी बिकॉज़ से मल्टीपल पैराग्राफ रे लिखछन ओके तो स्ट्रक्चरली ए माने टिके बहुत ही सिंटैक्स और ए सब दिन सोडा टिके बहुत ही स्ट्रिक्टली देखो ओके तो एटा गला आपनकर हाउ यू विल राइट द प्रेस यू विल सी सम एग्जांपल्स बट आउ गोटे तार इंपोर्टेंट जिंस रहला तार टाइटल ओके तो प्रेसीटा पढिला परे जो सेंट्रल जो ओरिजिनल पैसेजटा पढला परे तार जो सेंट्रल थीम गोटे थिबो आपन कोन लागु जे पैसेजटा कहा ऊपर ठीक अछि फॉर एग्जांपल आमे आज जो जोटा म आपन को टास्क देछि जो फाइलटा देछि बहुत सिंपल पैसेजटा अछि विल स्टार्ट विथ very easy and then we will go to okay little bit difficult along with the exam PYQ jete exams hame discuss kallu tara last 5 years questions okay that every class re alpo ame taku discuss karibu so by the end apanଙ୍କର 5 years ro question solved heyi thibo apan pakhre thibo okay ସବୁ exam ro 5 years nahi ADL प्रथम थर ପାଇଁ ହେଲା okay OES रो तार पैटर्न अलगा थिला पूरा ठीक अछि बट जति आपनकर हे पाला बट सिविल सर्विस और जुडिशियल सर्विस में आराम रे 5 इयर्स की 5 इयर्स पूर्वरु भी आपनकर अवेलेबल अछि से जहाँ पे अवेलेबल अछि सेटा हम देखि परिबो अलोंग विथ दैट हमें यूपीएससी रो भी ताको सॉल्व कर देले देन यू नो कंप्लीटली आपण रेडी रहबे ओके कंपलसरी इंग्लिश में ओके सो कमिंग टू द टाइटल आपण को दबार केमती अछि आर देयर सर्टेन रूल्स देयर इज ओनली वन रूल ओके टाइटल जेतले हम दोछु सेतरे हमें मेन तार लेंथ ऑफ द टाइटल और कंटेंट ऑफ द टाइटल को देखु कंटेंट ऑफ द टाइटल जोटा सेंट्रल थीम अछि आपनकर पैसेज रो सेही वर्ड्स उडा एथरे इंक्लूड होबा दरकार टाइटल शुड बी सिंपल बेसी ताकू आउट ऑफ द वर्ल्ड की आपण बहुत ही गोटे यू नो इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग टाइटल किछि दबा दरकार नै जते प्लेन होबा सेते भलो एंड लेंथ पई देयर इज ए 3+1 रूल 3+1 रूल मीन्स यदि तीनटा वर्ड आपण यूज करके टाइटलटा दउचंती ताले सेटा बहुत भलो मैक्सिमम आ गोटे वर्ड यूज करके 4 वर्ड्स शुड बी देयर दीस वर्ड्स आर अपार्ट फ्रॉम द कनेक्टिव्स एंड ऑल ओके आर्टिकल्स कनेक्टिव्स ए एंड ओके दी और ताकू छाडी दे ओके फॉर एग्जांपल हमें आज जो पैसेजटा हमरो दिया है जी it has been given for the exercise सेटा वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर अछि ओके ता माने कोन वुमेन एम्पावरमेंट विल बी देयर इन माय ओके टाइटल मो टाइटल रे वुमेन एम्पावरमेंट जा भी रहबो ता पर मु तो केमती कोन चेंज कर करी आ दिटा वर्ड ऐड कर देबी सेटा मो ऊपर डिपेंड करछ तो सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज हैज टू बी रिफ्लेक्टेड इन वेरी सिंपल वर्ड्स इन द टाइटल ऑफ द रेसिपी किछि सेमिति किछि असुविधा नै ओके बट जेहेतु गोटे पर्टिकुलर जिंस पई हमें लिखुछु ओके आपण देखि कि सेटा ताको लिखिबार अछि ओके जोटा कि पूरा कॉन्टेक्स्ट को ओके जस्टिस दे परतो इट शुड फिट द कॉन्टेक्स्ट ठीक अछि एटा प्रथम जो गुडा एटा पूरा इजी पैसेजेस अछि फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैसेज टा जोटा देछि that is 199 words okay 199 words of passage dechi now okay it is a small passage I will slowly read it but actually presi class re kono I'll not be reading the passages okay seta mo sete aguru class aguru de dechi okay group re bhi apan ko mil jibo I will try to give it in telegram or app re bhi apan mil jibo but tar solutions kari ke rahibo that will be available in the app okay app re apan ko mil jibo seta so प्रथम सैंपल प्रेसिटा देखंदो ओके हम स्लोली ताको रीड करूची trees give shade for benefit of others and while they themselves stand in the sun and endure the scorching heat they produce the fruit of which others profit the character of good men is like that of trees
What is the use of this perishable body if no use is made for it for the benefit of mankind? Sandalwood, the more it is rubbed, the more scent does it yield. Sugarcane, the more it is peeled and cut into pieces, the more juice does it produce. देखो एठी कौन ये जो एग्जांपल्स गुड़ा देला बॉडी रो कौन लाभ के सैंडल रो तो सी गुड़ा पॉइंट को प्रूफ करे पे एग्जांपल दउछ तो एगुड़ा बटा है इस जोटा एक्चुअल प्रेस लेखिबे कौन से जो जिंसटा को पॉइंट करूछ. Okay, that means you have to work for others in that sense approach. Okay, so the men who are noble at heart do not lose their qualities even in losing their lives. What matters whether men praise them or not. तो से ताको के प्रशंसा करू कि न करू, they are really not concerned. से ताको निजो काम करी कि जान. Okay, so this is a general thing on it. तो passage रे देछि आगु को अपन माने सब सिविल सर्वेंट्स जुडिशियल ऑफिसर्स और ये कोई होछनी. So you keep this thing in mind. Okay, अपन दीटा टाइप रो लोक पाइबे सर्विस रे कि जोडी भी जो भी काम करले जणे जे एक्चुअली कामटा करे प्राय से लोक को किछ दरकार नथाय. से तर ठीक रे काम करिवो से तर ही इज हैप्पी विथ दैट. He does not need recognition कि मो पाई सेटा हैला सेटा को अप्रोप्रिएट करिया पे आ गोटे सेट ऑफ लोक थान जे प्राय काम करंती कि एटलिस्ट देखांती कि हम काम करछु किंतु appropriation of the success सेटा से माने जेमते हेले करदे सेटा भी गोटे आर्ट समस्त को आसीबन सेटा राइट. तेनु से सेटा भी अछि माने फॉर एग्जांपल अपन जो देखिबे it is generally known that जेतेबेले यूपीए गवर्नमेंट थिला लालू यादव का अंडर रे ओके रेलवे मिनिस्ट्री वाज ए केस स्टडी. इट वाज ए केना स्पेशली जो गरीब रथ करिका स्टार्ट हेतला सेतरे प्लस जहाँ जब किसीटा जिनसे से कर भी तो कि एटलीस्ट स्टैटिस्टिक्स रे प्रोजेक्ट हैला एटा गोटे पूरा कंप्लीटली बहुत बढ़िया मैनेजरियल डिसीजंस से मन सुनै जति एंड इट वाज केस स्टडी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन केलॉग्स हार्वर्ड सेट भी पढ़ा हैला आईएम रे तो पढ़ा भी हैला. मच लेटर इट वाज नोन दैट ओके एक्चुअली से लोकोटा की जे सेटा करथिले इनिशियली के जो आईएएस ऑफिसर्स कर भी ना आसी गला से तरह बट एक्चुअली जो लोकों को पाई सेटा हेथिला से रेलवे बोर्ड रो मेंबर थिले ओके एंड ही वाज अ टेक्नोक्रेट इंजीनियर तांकर ता परे जितरो जा पडला ये करचंदी तो ही गॉट हिज ड्यू बट ही नेवर आस्क्ड फॉर इट. इसरो रे देखो हमरो जो स्पेस जहां पे हमें सब तेरे पाउचू सक्सेस बे द लॉट ऑफ पीपल हु डोंट कम आगु को आसी से माने ओके सेटा कोन तरी हम पे हे right. So anyway say jinchada se kochi what difference does it make whether they die at this moment or whether lives are prolonged? Happen what may, those who tread in the right path shall not set foot in any other. Life itself is unprofitable to a man who does not live for others. Okay, so it is important point ऐसे लिखिला तो इटा मो अंडरलाइन कर देबी. Life itself is unprofitable to a man who does not live for others. To live for the mere sake of living one's life is to live the life of dogs and crows. Okay. Those who lay down their lives for the sake of others will assuredly dwell forever in a world of bliss. 199 words. These are what we say. That like it. Okay. So, amara abhi say 67 to 70 words bhitere. Always remember about plus minus. Mane mate 67 to 70 words bhitere agata. So 6-7 words epot sepot re chodi. 60 words रो ओके 72 73 75 वर्ड्स भीतर है इट इज एक्सेप्ट. बहुत अधिक हे जिवा कथा ना कि बहुत कम भी हे जिवा कथा. सपोज मते 100 वर्ड्स रे कहछि लेखन प्रेसिडा मु 60 वर्ड्स रे लिखली ओके तो सेतरे भी मार्क पटे बेसी छोटो भी हे जिवा कथा न बहुत अधिक भी हे जिवा कथा प्लस माइनस 10%. ठीक है मते 100 वर्ड रो देछि प्लस माइनस 10% इज 10 वर्ड्स. सो 90 रो नै कि 110 भीतर इट इज फाइन इफ it has asked me to write a précis of 100 words. Which you got it? Plus minus 10%. Set up mind it. Right? So तापर से टाइटल तारो दला जहाँ भी हमें पढ़िलु गुड मैन लिव फॉर अदर्स. सो हमारा जो 3+1 टा में कहलु सेटा फॉलो करो गुड मैन लिव अदर्स. ओके फॉर द हवन राइट. सो 3+1 रूट फॉलो करो राइट. तो टाइटल एमती रहबा कथा कि छोटो रहबा कथा आउट आउट छोटो सेकंड देला वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड फूड प्रोडक्शन एंड काटे देले
4 words रोज ठीक अछि T+1 रे जाउछि सर ओके आ एमती नो कि 10 वर्ड रो गोटे मो टाइटल दोछि ओके टाइटल ता शॉर्ट रहबा कथा सिंपल रहबा कथा क्रिस्प रहबा कथा ओके सेटा बहुत इंपोर्टेंट नाउ यू सी द आउटलाइन से कोन करे so character of good men is like that of trees okay देखो फर्स्ट लाइन टाको काटी देला trees give a shade for benefit of others and other okay so एटा त character of good men is like that of trees सेटा को से copy paste वाला okay second टा देखो what is the use of this perishable body if no use is made of it for the benefit of mankind okay so next part टा से okay so ता पर sentence टा ही that it has marked okay तापर से एग्जांपल सब जेतला सैंडलवुड शुगर केन से गुडा से काटी दी okay the men who are noble at heart do not lose their qualities even in losing their lives those who tread in the right path will not set foot in any other to live for the mere sake of living one life is to live the life of dogs or crows those who lay down their lives for sake of others will assuredly dwell forever in a world of bliss okay एटा हला तारा आउटलाइन ता कि अपन ताको ड्राफ्ट भी कहि परिबे ड्राफ्ट प्रेसी लिखि परिबे आउटलाइन लिखले भी चलिबो तापर असला फेयर प्रेसी ओके सो टाइटल देला गुड मैन लिव फॉर अदर्स जहां से एठी लिखि छी ओके ताकू से निजो लैंग्वेज रे लिखिला ओके आउटलाइन ताको पैराफ्रेज कला आउटलाइन ता तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एक्चुअल क्वेश्चन कॉपी पेस्ट ताकू से फुनी चेंज कला ओके पैराफ्रेज कला okay सेथरे कोन grammatical rules अपन को मन रखिबार अछि you can just take it down किसी देइछि भी एटा after the class you can go through the this thing okay so first grammatical rule है ना सब बेले एटा थर्ड पर्सन रे लिखा है प्रेसिडेंट okay third person and in कोन indirect speech रे अपन को लिखा okay so suppose you कहू कि give me that chocolate Mr. X said, give me that chocolate. तो अपन तको reported speech में तको करियो. Okay, तो सेटा गोटे जिंस. Second, अपन को tense टा सोडे past रे रहइबो. सब बोलटा past tense रे लेखा. ठीक अछि. रेसिटा अपन सोडे past tense रे रखिए. Past tense रो कोनोसी appropriate form रे अपन तको लिखि परिबो. ठीक अछि. So tense तारा past रहइबो. Okay, third person रे लेखा हबो. माने according to the author. Okay. किसो सेथरे आउ अपन सी तो जनरली फर्स्ट पर्सन रे बहुत जगह रे देइथिबो ओके किसी गोटे कोन डायलॉग कहउचंती सेटा देइथिबो ओके सेटा को सेमती लिखिबार नै यू हैव टू चेंज इट टू थर्ड पर्सन एंड रिपोर्टेड स्पीच ओके इनडायरेक्ट स्पीच रे अपन को लिखिबार अछि सेटा ओके आउ यू विल राइट इट इन ओके पास्ट टेंस सिंपल इंग्लिश रे लिखा हबो बेसी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स टोटली यूज करिबेनी ओके आउ गोटे जिंस हैला कंपाउंड सेंटेंसेस अवॉइड करिवे दीटा सेंटेंस को मिसै देकी माने धरंतु एठी मोरो एक्सट्रैक्ट रे 6 टा की 7 टा की 8 टा सेंटेंस देछि मु ताको मिसै देली 3 टा सेंटेंस को गोटे सेंटेंस कर ठीक अछि सेटा इश्यू रहबा ओके सो स्मॉलर सेंटेंसेस रे लिखिबे जोडा ठीक रे बुझा पड़थिबो सिंपल वर्ड्स रे ताको लिखिबे ओके दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर प्रेसी प्रेसी रा गोटे जिंस हैला प्रेसी रा फ्लो ऑफ द प्रेसी okay flow of the pressy has to be interconnected okay the cohesive force सेटर थिबा दरकार एंती लागेबा त कि गोटे लाइन पढिला परे प्रेसी रा आरो लाइन ता से कोठु आउट आसे किछि तार कनेक्शन मिलो सेटा हबा कथा न okay एते कोन ना let us see the pressy what the the final pressy that it has written the character of good men is like that of trees they live for others and do not lose their qualities even in losing their lives they always follow the right path praise is immaterial to them to live for one's own sake is to live the life of beasts जोटा से लिखना crows and कौन लिखते हैं okay only those who lay down their lives for others will live forever in a world of bliss एटा से exactly से in a world of bliss लिखी छे अपन तको चेंज कर दे पारी okay try करिवे कि पूरा exactly same एटा न यूज करिया सेटा सेथरे भी से माने बहुत देखंती से ओके कुछ बोले तो कि पूरा सिंपल ईयर से लिखिला दिस इज अराउंड 67 वर्ड्स ओके जोटा कि एग्जैक्टली हमरो राइट जहां हमको लिखिबार थिला
66 67 से exactly 67 वर्ड को लिखिछु लिखिया पड़ियो सेटा फाइनल प्रेस या ड्राफ्ट गोटे हम लिखियो ओके either you call it draft or you call it rough or you call it outline जहां आपन सुविधा होछ ओके पतडा हला सेटा लिखले जदी म ओमिट कर देबी कोन किछ होबनी इट्स अ मैटर ऑफ जेमति हम मैथ्स में स्टेप मार्किंग हो ठीक है मतलब क्वेश्चन टा दिया है मैथ्स रो मु सीधा आंसर टा बाहर करी लिखि दे क्वेश्चन पेपर रे ताको सॉल्व कर देली आंसर टा लिखि दे इन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में कहू आउ मोर फ्रेंड को कला ना पूरा स्टेप वाइज से जिंस टा कर तो 5 भीतर में भी आई विल गेट 4 एंड ही विल गेट 5 कैन से स्टेप्स भी देखेला तो कांसेप्ट है सेट है ओके देयर इज नो unanimity among the various books and all that you have to give a draft eta mu more to recommend करूची कि आपण ड्राफ्ट टा लिखिबा दरकार आउटलाइन टा लिखिले आपण को you can expect some more marks okay मु previous year let's say जो particular candidate थिले जानकर last year माने 2020 रे ओके OJS रे ताकर प्रेसर जति की मार्क थिला she improved by 7 or 8 marks this time खाता आसी छेबे आ सेतरे गोटे मेजर जिंस हम देखिले कि से जिंसटा करथले से ड्राफ्ट टा एथरो को देथले ओके प्लस she written well also तो सेटा केवल मोबाइल जे डिफरेंस होबो मैक्सिमम 2 to 3 marks it won't be like 10 marks or 5 marks 8 marks hello सेटा माइंड रखियो any doubts you are having related to pressing anyone then you can ask me आस्ते आस्ते हम ए जो आपनकर असाइनमेंट दिया है कि देयर आर 3 or 4 असाइनमेंट्स एटा फर्स्ट असाइनमेंट राइट देखिए बस सेटा दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग नॉलेज तो एबे तो जहां में डिस्कस करलु रूल्स प्रेसिज ओवर बट वी आर गोइंग फॉर 4 or 5 क्लासेस फॉर प्रेसिज तो कारणटा हला कि आपण आस्ते आस्ते कॉम्प्लेक्सिटी और लैंग्वेज आपण को के हायर लेवल रो दरकार ओके सो एटा हमें आज जोटा फर्स्ट ए जो पर्टिकुलर मटेरियल ता आपण को ऐप रो आपण देखिबे एथरे जेति की देची दीज आर वेरी सिंपल ओके आउट शॉर्ट टाइप ऑफ ओरिजिनल पैसेजेस मैक्सिमम 300 400 वर्ड रो पैसेज गुडा अछि ओके एथरे आई थिंक तीनटा की चारटा देची सैंपल पैसेजेस ओके तापरे छटा की सातटा देची ये पैसेजेस ओके छोटा 7टा पैसेज दीची आपण को लिखिया फ्री सेटा ठीक अछि त आरो सॉल्यूशन टा आपण को सेठी मिली जिवो ऐप रे ओके एटा सिंपल तापर सेकंड लेवल रो पुनी देखिबा ओके काली पई आई विल गिव यू अ सेकंड लेवल माने आ टू टिके कॉम्प्लेक्सिटी एते बॉडी बनी बट लेंथ बॉडी ओके जोडा हमें 200 वर्ड्स रे भी देखु 300 वर्ड्स सो दैट विल बी डबल लाइक 600 700 वर्ड्स ठीक अछि सेटा मैक्सिमम सेति की आसे 1000 वर्ड रो एते आसेरो चांसेस कम 6 700 वर्ड्स रो आसे बट कॉम्प्लेक्सिटी टा बॉडी जी ठीक अछि माने वोकैबुलरी टा और स्ट्रांग हे जिवो ओके तनो से जिंसटा देखिबा सी एग्जाम लेवल रो क्वेश्चन इज बिटवीन मॉडरेट एंड हार्ड हला इजी तो केबे भी आसीबन ओके सो इट इज बिटवीन मॉडरेट एंड हार्ड आपण हार्ड टा जदी भलरे कर दउ जंती नॉर्मली से गुडा भी कर दे पारे सो लास्ट क्लास रे माने फोर्थ क्लास ऑन प्रेसी रे 2 वीक्स न बेटा सर दिस वीक नेक्स्ट वीक तो नेक्स्ट संडे रे जो आपण कर रहइबो सेथरे एथरे को फॉर एग्जांपल जो माने वीकली टेस्ट देखले ओके ओएस ओजेएस बैचेस रो आपण कर जो पैसेज टा पडिथिला जो टाइप रो वोकैबुलरी थिला ओके इवन आपण करो भी जोटा सेम पैसेज टा दिया थिला ओएफएस में भी सेम पैसेज टा दिया सेही टाइप रो पैसेजेस लास्ट ईयर रे हमें करबा 5-6टा करे सेटा एग्जाम रे सेमती पडिबनी बट स्टिल देन वी हैव टू बी रेडी फॉर इट बुझी परछन तो प्रेसी रे मार्क्स केमती बेटर रखबी आउथरे मु ताको समराइज कर दोछ नंबर 1 सिंपल इंग्लिश रे मते लिखिबार अछि फाइनल प्रेसी ताको ओके ओरिजिनल पैसेज जिते डिफिकल्ट देखाई एटा हला पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2
टाइटल टा जो देबी ओके सेटा मते प्रॉपर्ली दबार अछि जो रूल्स मु कहले सिंपल टू द पॉइंट सेटा दबार अछि ओके राइट सो कीप दैट इन माइंड तापर आसिला कोन लेंथ ऑफ द प्रेसी if it has been given in the question ताले अब किछ दरकार नै हम ओरिजिनल पैसेज रो लेंथ में आपण से जति वर्ड रे देखि आपण सेति वर्ड रे लिखिबे जदि किछ देनी यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द ओरिजिनल पैसेज तारो 1/3 आपण प्लस माइनस 10% करिकि मैक्सिमम तारो सेति कि आपण लिखिबे मिनिमम मैक्सिमम भीतर लिखिबार अछि ओके एक्चुअली मैक्सिमम पिला एक्सीड करंती बहुत पिला छोटो प्रेसी लिखि दियन सेटा भी मार्क कटिबो सेतो ठीक है you are expected to write a précis of 150 words you have written it of let's say 100 words 90 words 110 words you will lose some marks 3 4 5 marks so that कटि जिवो okay and ए जिंसटा मु कहिलेनी but mandatorily after writing the fair précis केवल fair précis लिखि सारला परे total number of words in the précis side रे लिखा हो ठीक है तो मु जोटी फुल स्टॉप देनी लास्ट सेंटेंस परे से साइड रे लिखिबार अछि केते वर्ड्स एठी जेंति से देछि सैंपल पे ओके इफ यू सी हियर से लास्ट रे लिखि फॉर एग्जांपल एठी से लिखिना 193 वर्ड्स ओके हियर इट हैज रिटन 193 वर्ड्स आफ्टर द लास्ट ओके वर्ड फुल स्टॉप देला पर 193 वर्ड्स लिखिला आपन को सेंति लिखिया पे पड़ियो आउ सर हमर ओजेएस रे तो 100 मार्क्स 100 वर्ड्स को आइचे तो तो सेटा भी 110 भीतर सेठी भी आपन लिखिबे यू टू राइट ना से कहजंती 100 वर्ड्स लिखंतु कि 350 वर्ड्स लिखंतु आपन से देखेबे मु लिखि जी सेठी भीतर बुझि पाले सो यू हैव टू ट्रेसी रे पचारु न पचारु it is mandatory that you mention the number of words of your final place you have to write it in this way okay ओके सर केते टोटल नंबर किस लिखे रखन जस्ट यू राइट एतिक वर्ड्स okay that is also very very important एटा भी प्रेसी रो मार्किंग रो गोटे एस्पेक्ट ठीक अछि तो सेटा भी आपण निश्चित भाबरे देखो ओके ऐड करिवे राइट आस्ते आस्ते आपण जते प्रैक्टिस करिवे तो ए जो क्वेश्चन टा पचारले कि टफ पैसेजेस रे इंपोर्टेंट कोटा न हमें केमती जानि एटा जनरली दीटा टाइप रो पैसेजेस रे हमको प्रॉब्लम आसीबो गोटे हला if the passage is heavily laden with lot of data जदि से पैसेज रे बहुत डेटा देछि लेट्स से गोटे इकोनॉमी ऊपर गोटे पैसेज आसीछि इंडिया's जीडीपी लेट्स से फॉर एग्जांपल सी देछि क्वार्टरली डेटा ओके फर्स्ट क्वार्टर रे आइता सर्विसेज या करतला सेकंड क्वार्टर तो ऑलमोस्ट मु देखिली मोर एंटायर ओके पैसेज रे खाली डेटा अछि सेठी मते प्रॉब्लम हो कान सेठी जोठी कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा और एग्जांपल्स मिसी की अछि जति ए फर्स्ट पैसेज रे से किछि एग्जांपल्स देला से सैंडलवुड रे एग्जांपल देला व्हाटएवर तो सेगुडा हमें इजीली बाहर कर दे हमरो दरकार नै सेटा फेयर प्रेस रे बट ए केस रे गोटे असुविधा हबो जोठी की ऑलमोस्ट द एंटायर आपनकर पैसेजेस बेस्ड ऑन डेटा जेटा नंबर 1 सेकंड हला फिलोसॉफिकल पैसेजेस ओके से पैसेज गोटे एब्स्ट्रैक्ट जिंस ऊपर किछि गोटे कहूछ राइट से जगह रे को एटा कॉम्प्रिहेंशन रो कि जिंस एटा हमरो देखो एग्जाम रो कैटेगरीज हिसाब रे एटा सिविल सर्विसेज रे ही पढियोर चांसेस ओएस रे जदि भी पढला आ बाकी जते एग्जाम्स रे प्रिपेयर करछु सेतरे सीधा ही आसीबो बोली हमें एक्सपेक्ट करबा कि जदि भी डिफिकल्ट आसीबो एते भी डिफिकल्ट आसीबो कि आपण करि परिबे ना ओके सो दैट यू हैव टू सी तो एटा से कहली जोटा नेक्स्ट वीक रे आज और काली आज हमें पूरा इजी रू स्टार्ट करू काली टिके लेवल टा टिके अधिक रहइबो आउ नेक्स्ट सैटरडे ओके केना ए वीक भीतर भी आपन को अलगा अलगा यू विल गेट लॉट ऑफ वर्क टू डू ओके से ग्रुप रे ही मु तको पोस्ट कर देबी टेलीग्राम रे भी पोस्ट कर देबी ओके आउ सॉल्यूशंस जनरली वन डे पर आपन को निज ऐप रे मिल जिवो जे जो कोर्स से जॉइन करछन से देखिबो गोटे फोल्डर थिबो ओके आफ्टर द क्लास यू चेक compulsory English बोली ओके सो से compulsory English फोल्डर रे से सब दिन जोडा हमर थिबो ओके बुझि परले सो एटा कहया को सबटू
one of the scoring parts तार यदि आपण ठीक रे लिखु चंदी you can expect around 60% marks in this. Okay, and generally it is very difficult to get more than 60-70%. Okay, so 20 marks ru apanakara 12 ru even 14 you can get if you write better. 18 semiti to generally marks asiboni 15 maximum jayeki. Okay, apanakara asibo to eta gote se you can get proper marks if you stick to the structure of the presi. Presi structure ta man rakhe gotiye paragraph re presi lekha ho presi ro multiple paragraphs motte ru karibe mane presi ro content bhalo thibo और multiple paragraphs यदि आपण करि करते छै प्रेसी ताले मार्क बहुत कमी जीवो इवन 0 0 भी दे दियंते ठीक अछि तो सेडा बेसिक जिंस ताको ब्रेक करिवे टाइटल रे शॉर्ट सेटिंग टाउ माने रिस्क टाइटल रखिवे ओके दैट इज पूरा जोटा की सेंट्रल थीम को मैच करूथिबो बट शॉर्ट आउट सिंपल थिबो बुझि पाबो सो यू go through this okay एगुड़ा तो सब तार सॉल्यूशन हिसाब देखि आज जोटा मु देथिली आपन को दिस इज योर वर्क ओके से जो मटेरियल रे जोड़ा देछि पैसेजेस सेगुड़ा आपन निजे तक करिवे ओके बट एटा हला आज रो एक्सरसाइज ता दिस हैव ऑलरेडी बीन गिवन इन टेलीग्राम आ एथरे भी दे देछि मु ग्रुप रे ओके एथरे दीटा काम आपन दिया छि कोन न जो प्रेसीटा दिया हला एटा वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर अछि ओके एटा बहुत बड़ प्रेसी नो इट इज समवेयर अराउंड 600-700 वर्ड्स भीतर थिबो तार फर्स्ट हला 1/3 द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल प्रेसी आपन को लिखिबार अछि ओके सो फर्स्ट यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स तो सेटा फर्स्ट काम हो कैन आई वर्ड केते किछि से देई सो फर्स्ट आपन वर्ड काउंट करिवे वर्ड काउंट कला परे तार 1/3 रे लिखिबे जदि किछि भी लिखा ले जस्ट राइट ए प्रेसी फॉर द फॉलोइंग पैसेज जदि दिया हला ताले जिमति आपन करियर अछि तार गोटे प्रॉपर टाइटल देबे जेतु वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर अछि त सेही टर्म ता रहिबो ओके प्लस सेथरे कोन आपन ऐड करि पाउछन बोला किंतु सेटा केते बड होय देखंदो डिफरेंट एग्जाम्स ओपीएससी रो सेंति व्यवस्था होता यूपीएससी रो प्रेसी पेपर अलग था यूपीएससी रो प्रेसी पेपर रे कोन ना गोटे वर्ड लेसे ग्रिड पैटर्न रे था ठीक अछि त सेटा ग्रिड पैटर्न रे थाए आउ सेटा कोन ना ताकू गोटे वर्ड लिखिया पई से जगह आपन को देथिबो गोटे वर्ड गोटे स्पेस रे लिखा हो ठीक अछि सो इफ आई विल शो यू दैट ओके त मु देखियले सेटा आपन जानि परिबे just a minute I'll just get that thing I'll show it to you जो women empowerment of the actual basically this is so that the achievement and achieve web forward
तो सेटा हमर पैसेज हम्म, सेटा वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर देश तो सेटा जो सेटा पॉइंट्स पॉइंट्स सब पॉइंट्स हम्म। गोइंग फॉरवर्ड आपको नहीं प्रेस लिखो ସେଇଟାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରେସିଟା ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ୟୁପିଏସସି ରେ କଣ ହୁଏ ତାର ସେମାନେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଗ୍ରିଡ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଓକେ ଆଉ ସେ ନମ୍ବରିଂ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଲାଇନ୍ସ ର ठीक अच्छे तो एट द एंड आप जी मु 27 लाइन्स लिखी इच लाइन रे 10 वर्ड्स अच्छे माने मोर 270 वर्ड्स हेगा ओके तो मते कैलकुलेट करिया पे सेटा सुविधा होय ओके ओके एटा देखंतु एई टाइप रो सेटा थाए से पांच पांचटा बॉक्स देछि ओके दीटा लाइन रे तो मु आपन जतिटा लिखिबे आपन जानि परिबे साइड रे ओके कि केतेटा आपन करे हला तो तांकु भी चेक करिया पे सुविधा हो आपन सेति की भीतर लिखले कि नहीं एठी आई डोंट थिंक सेमति किछि अछि ओके बट स्टिल देन यू हैव टू यू नो एटा गोटे पैटर्न बट आमे जते बेले लिखुछु ओपीएससी रे रूल पेपर दोचंत ओके यूपीएससी रे ब्लैंक पेपर था व्हाइट पेपर बट प्रेसी पे ए टाइप रो पेपर से दियंती ओके तो अपन जो रूल पेपर लिखुछंती अपन रूल पेपर रे प्रैक्टिस करिवे तो एथरे दीटा जिंस कहिछि अपन से दीटा जिंस ऊपर फोकस करिवार अछि फर्स्ट है नॉर्मली यू हैव टू राइट ए प्रेसी ऑफ द यू नो ओरिजिन ऑफ द पैसेज इन 1/3 द लेंथ ओके तापरे 100 वर्ड्स रे गोटे अपन को लिखिबार अछि ठीक अछि तो 100 वर्ड्स तो जो माने ओजेएस पे प्रिपेयर करचंती आपनकर सेटा दैट इज द पैटर्न व्हिच यू हैव टू फॉलो से जेते बड़ पैसेज देते हो बोते आपन को 100 वर्ड्स लिखियार अछि द प्रेसिडा ओके बट एवरीवन विल डू बोथ अपन दीटा या करंतु ताले से जो कंपैरिजन रेशियोटा केमिति मु चेंज करबी से स्किलटा मोर आसी जो सपोज काली से चेंज कर दला एथर को 350 वर्ड्स पकै छी आथर किछि पकेला जस्ट का लिखला प्रेसी लेखंतो किंबा तब आउरी कंप्रेशन रेशियो बढ़ाई देला राइट विद इन 150 वर्ड्स राइट विद इन 200 वर्ड्स ठीक अछि जदि से स्किलटा मु एक्वायर कली कि मते जेति की वर्ड्स भीतर कुहाला मु प्रेसीटा लिखि पारुची ओके ताहले मते किछि प्रॉब्लम नै सो फॉर दैट एटी कोन एटा दिस वुड बी समवेयर अराउंड 600 to 700 वर्ड्स तो तारो 1/3 जेते बडे मु करूची ओके सो 230 to 40 220 to 30 वर्ड्स भीतर से 230 वर्ड्स में लिखिली प्लस 100 वर्ड प्रेस भी लिखिली सेम ओके सोर्स ऊपर तो सेटा बहुत ही गोटे इंपोर्टेंट जिंस से स्किलटा आपण एक्वायर करिया भी चेष्टा करंतु आ भीतर सो एवरी 2 or 3 days आई विल बी गिविंग यू ओके दिस एक्सरसाइज इन योर ग्रुप ओके तो सेटा आपण देखि कि ताको चेष्टा करिवे ताको लिखिया पे ओके सो काली हम कोन करिबा मु आज आपण को जो गुडा जो पांचटा परीक्षा रो ओके देखै छी the answer the questions okay सेही पांचटा परीक्षा रो सॉल्यूशन उडा करी डिस्कस करिबा ओनली प्रेसी ठीक अछि जोडा की हला ओएफएस ओईएस ओजेएस सिविल सर्विस ओके और एडीएल रो जो लास्ट ईयर रो क्वेश्चन रिसेंट क्वेश्चन जोडा सबुरो तारो प्रेसी पार्टटा based on whatever instruction have been given to us okay in that exam say hisab to you have the papers okay और ओपीएससी साइट टू डाउनलोड करबे ग्रुप रे दे देछि आफ्टर द क्लास मु एथरे भी टेलीग्राम रे भी दे देबी ओके आई टेलीग्राम में दे देछि ऑलरेडी ओके तो सेटा आपण डाउनलोड करी तारो प्रेसी उडा बनै की रखंतु और काली हमें तारो डिस्कशन करियो ओके सो दैट विल बी द वर्क फॉर टुमारो प्लस एई गोटे माने दैट इज व्हाट वी विल डू टुमारो ठीक अछि आपण आगुर कर देबो भलो नले एईटा मिनिमम आपण करिवार अछि
Okay, this passage you have to write a précis based on it in two formats. Okay, 1/3 and 100 words. Is it clear? Any other doubts? Then please ask. हाँ सी ताको पॉइंट्स लिखी छी आपण ताको ये करिवे कोन कहले you have to write it in one paragraph सी ताको पॉइंट्स रे देछि आपण किंतु लिखले गोटे पैराग्राफ रे लिखिवे आपण पॉइंट्स माने आपण पॉइंट्स रे लिखिले भी सेटा गोटे ही पैराग्राफ हो नॉट इन मल्टीपल पैराग्राफ्स ओके सी प्रेसीटा केबे भी पॉइंट्स रे लिखा होएनी आउटलाइन ड्राफ्टटा पॉइंट्स रे रहि पारे प्रेसीटा गोटे पैराग्राफ रे लिखा हो कंटीन्यूअस फ्लो रे ठीक अछि त generally it is accepted. If you see certain books, for example, आपण Webster's देखिबे ठीक अछि किंबा hidden treasure रा जो प्रथम version I know I hope you know what is hidden treasure. Hidden treasure is a classic grammar book. Okay, जेमति आपण ब्रेनन मार्टिन सुनि जंती ब्रेनन मार्टिन सुनि जंती hidden treasure गोटे बुक अछि बहुत पुराना एबे आ तक यूज करनती काहे से डिजिटाइज हेई ठीक अछि तो से जहाँ पाखे थिबो आगुरु से हिडन ट्रेजर बुक करिकारे से थरे तार मल्टीपल पैराग्राफ्स से भी से देती प्रेसी बट एठी हमर एठी जोटा एक्सेप्ट मोर एक्सेप्टेड दैट इज इन सिंगल पैराग्राफ यू हैव टू राइट बिकॉज़ ऑफ दिस रीजन केते पिलां को 0 भी दे देछंती ओके ताको भीतर भी के जण शेयर भी करथले ताको खाता ऑनलाइन रे दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस ओके दैट यू हैव रिटन द प्रेसी फेयर प्रेसी इन मल्टीपल पैराग्राफ्स ओके ताको तो मतलब पॉइंट्स सब लिखिबो तो ताको पॉइंट करके ताको पैराग्राफ में लिखले चले मेन तो आउटलाइन ता तो जहां भी हेले ताको माने अपन लाइन बाय लाइन लिखिया पड़ियो से तो सेटा माने गोटे लाइन लिखिली फिर नेक्स्ट लाइन ता तापर लिखिली तो सेटा सेमति ही रहइबो ये एठी से कोन करछि जोटा हमें एनालाइज करथुरु मटेरियल रे से डैश दे देछि ओके आपण सेमति दे पर इज प्रॉब्लम ओके ना अपन जदी ताको सेमति गोटे टैबुलर फॉर्म रे जने लिखुचंती मींस आई राइट 6 वर्ड्स आउ तापर नेक्स्ट लाइन रे सेही 6टा वर्ड तळे आउ 6टा वर्ड सेमिति जदी मु लिखि चलली ताहले मु काउंट कर दे परिबी ओके हां कहले ना अप्रोक्सीमेशन ता केमति करिवे ना आपण दीटा लाइन ओके ऊपर दीटा लाइन मजूरी दीटा लाइन तळु तार एवरेज बार कर दे तापर नंबर ऑफ लाइंस बट यू राइट देयर अप्रोक्सीमेट सेटा बेसी इंपोर्टेंट मतलब एग्जैक्ट वर्ड तो नो बट ओजेएस रे फॉर एग्जांपल यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम 150 मिनिट मिलुची पांचटा क्वेश्चन पे कोन करिवे ओएस करी करे मैक्सिमम टाइम पळाए एसे रे 100 मार्क रो एसे पडिबो तो 3 आवर्स रो तो से पूरा घंटे आपनकर सेठी नै गला एठी तो एसे 150 वर्ड्स रो ओजेएस रे ठीक अछि 150 वर्ड्स रो मैक्सिमम मत 15 20 मिनिट रे सरजियो मोर तो मोर आउरी एते टाइम पडलेनी इट विल नॉट टेक लॉ पेपर से जहा आपन टाइम रो इश्यू रहिबो जदि आपन मैनेज न करले बट इंग्लिश रे एम्पल टाइम आपन को मिलिबो गणि देले भी किछ असुविधा नै हां ओ सेठी आपन टिके अधिक लिखिया भी पडिबो निहाती बाबरे हां माने आपण सेही हिसाब रे ताकू देखिबे कि केते आवर तो आपनकर 100 मार्क्स टोटल आपनकर धरंतु 300 मार्क्स अछि ओके 100 मार्क्स एसे ऊपर दोछि तो 1/3 हे गला 3 आवर पेपर तो घंटे आपण दे परिबे मैथमेटिकली हमें जदी कथा करियो ठीक अछि केते पिला ताठू अधिक लेखंती भी काहे कि ना ताको ग्रामर जल्दी सार देबे सन 1000 words बहुत आगुरु हे जिवो माने you won't take 1 hour to write 1000 words but कथाटा हला आपण प्लानिंग करियो ना 10-15 मिनिट्स सेतर भी पळे जदी गोटे अननोन सब्जेक्ट पढियो एठी कोन होउची ना सब वर्ष सब्जेक्ट रिपीट हे जाय तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करि के जायथियो से देखिला मोर ता भीतर 2-3टा रिपीटेशन पड़ला तो मु ऑलरेडी प्रिपेयर करि के आस्ती तो सेठी ब्लूप्रिंट बने पे एते टाइम न होनी तो मु धरास के ऑलरेडी मु तो प्रैक्टिस करि के आछि सेटा तो ब्लूप्रिंट बट फॉर एग्जांपल यूपीएससी करि करे सेठी जो स्टेटमेंट बेस्ड की ये बेस्ड क्वेश्चन पड़ुची आपनकर हां
तो से कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पढुची तो से जगह रे आपण जते प्रिपेयर करथिले भी आपण टिके भाबिबा पई पडिबो मु कोन लिखिबी मु एई 10टा पॉइंट लिखिबी एई पैराग्राफ या लिखिबी सेटा गोटे आपण को आउटलाइन बना पे पडिबो ओके एठी भी जहां भी आपण देखिबे एसे रे आउटलाइन बना दरकार एसे रो एथि कथा आउटलाइन टा फेयर कॉपी रे लिख कराबेनी पछरे आपण दो करिवे बट ट्रेसी रो आउटलाइन टा आपण को देखिबा कथा फेयर रे करबा कथा माने तुरंत मोर 50 टा लाइन अछि आपनकर पैसेज तो 1 and 2 25 26 आउ 49 50 ठीक अछि 25th लाइन 26th लाइन लास्ट एटा माने आपण गोटे गोटे भी नहीं पारि जेते अधिक नेबे गोटे सेट रे आपनकर रैंडमाइजेशन सेति के अधिक हो मींस सेटा आपनकर एक्यूरेसी बेटर आसी मु एमती फर्स्ट लाइन नहीं पारि एग्जैक्टली मिडिल लाइन नहीं पारि और लास्ट लाइन नहीं पारि ताले भी एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन दरकार पड़े कोठी ना जोठी कि टाइम रो प्रेशर थिबो ए इंग्लिश पेपर्स रे मोस्ट एग्जाम्स रे टाइम प्रेशर न था ओके गॉट इट बुझि परले समझते सो आउ किछि डाउट अछि रिगार्डिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रेसी आउ जस्ट मु रिपीट कर दउ छि औतरे प्रेसी रे चारि पांचटा जिंस मन रखिबे फर्स्ट जिंस हैला कि ट्राई टू गिव ए ड्राफ्ट ओके किंबा आउटलाइन गोटे दबा पे चेष्टा करिवे आउटलाइन केमती हबो कि आपण जो फर्स्ट रीडिंग कले आस्ते आस्ते रीडिंग कले आउ जोटा इंपोर्टेंट आपण को लागुची जोटा कॉन्सेप्चुअल जिंस नॉट फैक्चुअल से गुडा अंडरलाइन कर देथिबे ठीक अछि तो सेई गुडा को ही आपण को लिखिबार अछि एज ड्राफ्ट राइट तापर इता ताको फेयर करिवे ग्रामेटिकल रूल्स माने रखिबे थर्ड पर्सन रे सब बेले सेटा रखिबे इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच ओके पास्ट टेंस रे रहइबो ठीक अछि आउ तार टाइटल टा जो देबे 3+1 रूल फॉलो करियो मींस 4 वर्ड्स मैक्सिमम ओके कनेक्टिव्स को छाडी देबे 4 वर्ड्स मैक्सिमम आपन को रखिबार अछि ताटो अधिका न रखिबाटा बेटर बुझि बले सो these are the things which you have to keep in mind grammatically आउ जेते सिंपल इंग्लिश रे लिखिबे सेते अधिका आपन को मार्क्स मिलिबो सो यू राइट this particular ए जो जोटा दिया हला 30th September 2023 रे लिखा अछि एटा बहुत ही माने छोटो नहीं एटा इट इज अराउंड 700 words 600-700 words होबो बट it is like कोन the English or the language is very simple language से देछि ओके सो दैट आपण से थ्रू स्टार्ट करि परिबे अधिका जदि आपण प्रैक्टिस करिवे ताले जो मटेरियल टा फर्स्ट सेट मटेरियल टा से थ्रू प्रैक्टिस करि परिबे ओके बट सेगुडा आपण को ऊपर डिपेंड करछ आपण टाइम रे करिवे बट एटा जहा भी हेले काली आगुरु जो माने करि कि पठाय पे जाउ जदि पठाय दे परिबे ओके आई विल चेक इट एंड टेल यू व्हाट आर द एरर्स एंड ऑल ओके यू कैन convert it into one single pdf okay don't send images किना सेटा पुनी ना ता ऊपर मार्किंग करिया पे डिफिकल्ट हबो से पेन ऊपर so you convert it into pdf and you can whatsapp it to me okay ए नंबर whatsapp कर दे परिबे 9437002210 okay वॉइस मैसेज रो आपण कहि देबी कोन कोन आपण को इंप्रूव करिवार अछि okay जदि भी आपनकर किछि लेट्स से एरर्स रहउची ग्रामेटिकल एरर्स रहउची स्पेलिंग एरर्स रहउची डोंट वरी यू कंटिन्यू टू राइट आपण लेखन तो सेटा आस्ते आस्ते सेटा कमियो प्रैक्टिस टा बेसी इंपोर्टेंट ठीक है तो प्रैक्टिस टा बेसी इंपोर्टेंट आउ प्रैक्टिस कोठू करिवे जदि आपण पचरचंदी ओपीएससी रो बहुत गुडे ए टाइप रो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश रो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स अछि ओपीएससी साइट रो ही डाउनलोड कर दियंतु जो भी एग्जाम हो जेते प्रकार रो ग्रुप एग्जाम्स अछि जोथरे इंग्लिश अछि प्रेसिडा प्राय पड़े बहुत गुडे एग्जाम तो मु इंक्लूड भी करिनी मु 5टी एग्जाम ही देखिए लेकिन आउर बहुत एग्जाम्स अछि ओके से गुडा भी आपण ये करि परिबे ओके बेटर डायरेक्टली ओपीएससी रो और यूपीएससी रो क्वेश्चंस डायरेक्टली जदी करिवे ताले सेटा बहुत भलो ताले माने एग्जाम पैटर्न रही आपण एग्जाम लेवल रही आपण प्रिपरेशन टा करूछन ओके सेही लेवल रो ताठू टिके ऊपर लेवल रो दीटा जगह करा आज जोडे दिया होची दिस इज जस्ट स्टार्टिंग ओके फर्स्ट पार्ट रो तेनु बहुत ही सिंपल जिंसडा दिया होची ओके सो विल स्टॉप काली 8 o'clock रे आपण क्लासेस अछि ओके ऑनलाइन क्लास जोटा रहउची 8 o'clock रे रहउची तो कटक रे जो क्लास रहउची सेटा क्लासरूम 4 PM दैट इज क्लासरूम सेटा लाइव वेनी ओके
So सेटा जे कटक रे classroom करे पे चाहूँगी तो 4 o'clock you can come over to Katak. Same Saturday and Sunday. Okay. So we'll stop here then. This is another class.